All right. Assalamu alaikum, everyone. We all know that we've started this very important chapter called chemical reactions. And in this very chapter, we have three sub-chapters called chemical reactions, which is rate of reactions, reversible reaction, and redox reaction. So in last two lessons, we completed the rate of reaction, all the factors, and how to measure the rate of reaction. And along with these two chapters, we've also discussed the introduction to reversible reaction. So let me join from the other device and let's review the entire thing we did yesterday. And then we try to complete the reversible reaction, inshallah, in today's class. Before I start, if you have any question, okay. So I hope I'm audible, perfectly audible, and screen is visible. Yes. Yes, sir. Good. All right. So today we are going to start. We have actually started this chapter yesterday, but let's begin the same topic. जो हमने last 5 minutes में पढ़ा था. The topic is called reversible reaction. It is a type of reaction in which takes place in both direction, the forward and the backward. Forward reaction होता है when the reaction goes from left to right, and backward is when right to left. This is the symbol, double-headed arrow, that we use for reversible reaction. You can see this is the symbol we use for reversible reactions. So a reaction that takes place, that goes both in forward and backward direction, are called reversible reactions. So, and we know that under closed conditions, जब system आपका close है, a situation arises, or stage come when the rate of the forward and backward are equal. जब forward और backward same हो जाएंगे, तो we can say that system has achieved equilibrium, and that equilibrium is called dynamic equilibrium. So there are two types of reactions in nature: reversible and irreversible. Reversible are those which goes in both directions, forward and backward, whereas irreversible are those which goes only in one direction. For example, this is how you represent irreversible reaction. For example, you burn methane. It's the same gas that we use in our गाड़ियों के engine में use करते हैं. When you burn this gas, you will get CO2 and water, and a lot of energy is given out, right? So can you convert everything back into the fuel? क्या हम फ्यूल को वापस वो जो गैस सिलेंसर से निकल जाती है एग्जॉस्ट से, क्या हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वापस फ्यूल में, पेट्रोल में? इट्स इम्पॉसिबल, राइट? एंड दोस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड irreversible. But those reaction like this one, ammonia, can be reversed back. और मैंने बताया when the rate of the forward and backward are equal, then we can say that the reaction has achieved equilibrium. And this is only possible when the system is a closed system. Otherwise, if the system is not closed, the gases form may escape. इसमें जो गैस बनी है वो क्या हो सकती है? The gases may escape as a result of the forward reaction. तो अगर गैस escape हो गई है, तो reaction तो backward जाएगा ही नहीं. If there is no backward reaction, there is no equilibrium. So first we discuss the dynamic equilibrium, then conditions. Now we are going to learn the features of dynamic equilibrium. What are the features? So features में क्या लिखेंगे हम? At equilibrium, एक feature तो हम पहले ही बता चुके. At equilibrium, the rate of the forward and backward reaction are equal or same. That is the first feature. At equilibrium होगा ही तब when the rate of the forward and backward are equal. That is the first feature. Let me finish with it. The second feature is once the reaction has achieved equilibrium, the concentration of both sides does not changes. At equilibrium, जब भी equilibrium establish होगा, तो जितनी ये side है, ये उतनी ही रहेगी as long as the reaction is at equilibrium. और जितनी ये side है, I mean the reactant and the product, their concentration does not changes. So what is the second feature? At equilibrium,
the concentration of both reactants and products does not changes. So dynamic equilibrium is when the rate of forward and backward are equal in a closed system. That is the condition. What is the condition to achieve that equilibrium? The system must be closed. And once the reaction has achieved equilibrium, what are the features? At equilibrium, the rate of forward and backward are equal. And at equilibrium, the concentration of both sides stays the same, does not changes, stays the same, as long as the system is at equilibrium. And as I mentioned, the rate of the forward and backward, they are equal. Any question? Yes, Anaya. Sure. I wanted to ask if the temperature of specific reactions could be considered as a feature for equilibrium. No, not temperature is not a feature. When you change something, I mean, we can change the temperature, we can change the pressure, we can change the concentration. Those are not the features. The features, I mean, if you look at when the system is at equilibrium under any certain temperature or pressure condition, then we need to investigate that system and see उसमें क्या है. उसमें क्या होगा? दो चीजें होंगी. System, the forward or backward would be equal. That is the first feature. And the second feature would be as long as the reaction is at equilibrium, the concentration won't change. It remains the same on both sides. But yes, we can change the conditions. We can change the conditions to change the position of equilibrium. And what are those conditions? What are those conditions? So factors. Now, since we have already understood the whole idea of equilibrium, what is the condition, what are the features, let's now investigate the features, the factors that can affect the position of equilibrium. For example, temperature, pressure, and concentration. These are the three factors. When the system is at equilibrium and you change the temperature, what will happen to the position? What will happen to the rate of the forward and backward? Or you change the pressure, or you change the concentration. So we have three factors. Number one, temperature. And let me tell you, this is the most important. I want everyone to listen very closely. So temperature is the first factor that is going to can affect the position of equilibrium. Now, we all know that before we see the temperature, we need to check that what type of reaction under observation. So let's check the type of reaction. We know there are two types of reaction in nature. Some reaction have positive enthalpies, other type of reaction have negative enthalpies. So it depends on, for temperature, check delta H. So if the delta H is positive, it is negative, then you further have two choices. If the reaction has a positive enthalpy, that means the reaction is endothermic. If the reaction is endothermic and it is at equilibrium, for example, let's imagine you have a reaction, calcium carbonate. It's a solid thing. It's reversible reaction with its oxide and carbon dioxide. System is a closed system. And this reaction has a positive enthalpy. It could be positive 1, positive 100, positive 1000, but it is positive, any value in positive. Now we have, and the reaction achieves equilibrium, let's imagine at 250 degrees Celsius. It could be any temperature. मैंने 250 assume किया. Now system is perfectly at equilibrium. The forward and backward are equal. It is closed. The concentration of both sides stays the same as long as the reaction is at equilibrium. Now, since we are investigating the effect of change in temperature, let's now change the temperature. When I say change the temperature, boys and girls, we can change the temperature either by increasing it, or you can decrease the temperature to see the effect on the position of equilibrium. First, let's study the effect of increase of temperature of a reaction whose enthalpy is positive. तो पहले आपको ये चेक करना, आप डायरेक्ट किसी का इंक्रीज डिक्रीज नहीं देख सकते. आपने सबसे पहले क्या चेक करना है? Check the enthalpy. If enthalpy of the reaction is positive, that shows the reaction is endo. अच्छा, endo, ये तो दो डायरेक्शंस में जा रहा है. जोया से पूछ रहा हूं मैं. Zoya, this reaction is happening in two directions.
if enthalpy is positive, what does this mean? सबने सोचना है, but Zoya will answer. When the enthalpy is positive, whether the forward or the backward reaction is positive. Positive का क्या मतलब है? Forward positive है या backward positive है? ये दोनों ही positive. Shabash. I mean, positive could be both positive, or one direction positive, one could be negative. Yes, Wait. anyone in the class? Yes, Dr. Anaya? Yes, sir. Usually it means that the forward reaction is endothermic. Excellent. सब लोग कान खोल के सुने. Excellent, Zoya and Anaya. When the enthalpy is positive, that means the forward is endo. उस reaction का forward endo है. And the reaction which have positive, जिसका forward endo होगा, उसी reaction का backward exo होगा. Make sense, everyone? If the enthalpy is positive, that shows the forward reaction is endo. If the forward is endo, then the backward must be opposite, exo. But if the enthalpy is negative, for instance, we know that we have a very famous, your favorite, my favorite, Haber cycle. I mean, what do we call Haber process? So this reaction has a negative enthalpy. If a reaction have a negative enthalpy, that shows the forward is exo. If forward is exo, my dear students, then the backward has to be endo. बात समझ आ गई सबको? Yes, सबको हजम हो गई बात? Okay, let's back to this. If forward is endo, अब endo का मतलब सबको पता है, अभी हमने चैप्टर करना है ये वाला. Endo का मतलब है heat in. So forward का जब enthalpy positive है, उसका मतलब है कि forward reaction will absorb heat और backward reaction will release heat. So जब भी हम temperature increase करेंगे, whenever you increase the temperature, the system will absorb the X. देखो हमने system was at 250, हमने increase करके let's imagine 500 कर दिया, तो हमने heat को increase कर दिया ना, तो system will absorb the excess heat. तो excess heat किस direction में absorb करेगा? Forward में absorb करेगा या backward में? कौन सा endo है? In which direction it will absorb the heat? Everyone, one by one. Yes, Abdullah. Shabash. In which direction the excess heat will be absorbed? Yes, anyone in the class? Yes, Shabash. आपकी आवाज कट रही है. Yes, Amna. Yes, Amna. Forward? Forward में भाई endo में absorb होगी. Whenever you increase the temperature and the forward reaction is endothermic, excess heat तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि आपने उसका सिस्टम चेंज कर दिया ना, आपने टेम्परेचर चेंज किया, इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब. अब वो डिस्टर्ब हुआ है तो किस डायरेक्शन में ज्यादा होगा, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? तो मैंने आपको स्टोरी ये सुनाई है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एंथैल्पी चेक करनी है. इफ एंथैल्पी इज पॉजिटिव एंड यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम मूव्स टू राइट. फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा? फॉरवर्ड का मतलब है कि राइट पे जाएगा. This is the prediction. वो आपसे पूछेगा predict and explain what will happen to the position of equilibrium. So prediction is it will move to the right side. Now let's look at the explanation. What would be the explanation? अभी तो बताइए आपको. As the forward reaction is endothermic, this is the exact sentence that you are going to write. And ये कोई guess नहीं है इंशाल्लाह. This is a confirmed question in your school के एग्जाम भी और final एग्जाम में भी आएगा. As the forward reaction is endothermic, excess heat is absorbed in the forward direction. Excess heat is absorbed in the forward direction. So if there is more forward reaction, you will get more products. More products are made. अब तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया ना, तो अब रिएक्टेंट वापस जाना तो बंद हो जाएगा until कि वो एक्सेस हीट खत्म होगी, फिर से वो फॉरवर्ड बैकवर्ड होंगे until they again achieve the equilibrium. So what is the summary of the story? Whenever you're looking at the temperature, the effect of change in temperature, do not forget to check the enthalpy. If enthalpy of the reaction is positive and you are increasing the temperature, it will shift to the right side. क्यों जाएगा? As the forward is endo, excess heat is absorbed in the forward direction. If it is more forward, you will get more products. Make sense, everyone? Yes, Zainab. So I want everyone to predict for decrease in another 1 minute.
Write the answer on your notebooks, everyone. It should be exact opposite to what happens with the fall when you increase the temperature. Shabash. Everyone. Yes, Anaya. Sir, we can say that as the temperature is decreased, more heat will be released to compensate for the heat that has been decreased, which will make the reaction go in a backwards direction and more reactants would be formed. Excellent. All right. Yes, Ali, you want to say something? So first of all, you need to predict in which look. We are talking about the same reaction. Instead of 250, now we are decreasing the temperature. It could be anything. 100 कर दिया. तो जब मैंने टेम्परेचर 250 से 100 किया, तो ओवरऑल सिस्टम क्या होगा? सिस्टम पहले से ज्यादा हीट अप हो जाएगा या डू यू थिंक इट विल कूल डाउन? द सिस्टम का टेम्परेचर हमने कल कम किया तो इट विल डेफिनेटली कूल डाउन होगा. उसका टेम्परेचर कम किया, बट सिस्टम डोंट वांट टू increase or decrease, don't want increase or decrease in temperature. System want to stay at 250. अगर हमने 250 से increase किया था तो system ने excess वाला temperature absorb किया था. Now we are decreasing the temperature, making the system much colder than the 250. तो system क्या करेगा? System will start releasing heat itself. ताकि वो क्या maintain करे, so that it maintain the actual 250. तो मुझे बताओ किस direction में ये heat release कर रहा है? In which direction system is releasing heat? In the backward direction. So इसमें कहेंगे equilibrium. Make sense, everyone? Yes, Move sir. to the left. Now let's look at the reason. क्यों जाएगा? वही reason देनी है, exact same. आपने लिखना है as the forward reaction is endo. इसका forward endo है. हम लिखेंगे low temperature is compensated here to compensate the low temperature, backward reaction is favored. मैं लिख देता हूं as the forward, या आप ये भी लिख सकते हैं as the backward is exo. जिसका forward endo होता है उसका backward exo होता है. As the forward reaction is endothermic, backward reaction is favored. क्यों फेवर किया बैकवर्ड रिएक्शन? टू कॉम्पनसेट द अफेक्ट, क्योंकि हमने चेंज किया, आप उस चेंज को उसने कॉम्पनसेट कर रहे हैं. द अफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर, द अफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर. तो जब बैकवर्ड जाएगा तो क्या ज्यादा बनेंगे? मोर रिएक्टेंट्स आर मेड. मेक सेंस एवरीवन? So this is very important and Yes, it will be sir. part of your paper, inshallah. Yes, okay. Now let's look at the reaction which have negative enthalpy. It has the exact same idea जो अभी मैंने बताया था, 100% same. What you need to understand, the direction of the reaction. Which direction is endo? Which direction is exo? Mind it, everyone. Whenever you increase the temperature of a reaction which is at equilibrium, an increase in temperature always favors the endothermic direction. अच्छा, जिसकी इंथैल्पी पॉजिटिव है उसका एंडोथर्मिक क्या है? उसका एंडोथर्मिक राइट साइड है, फॉरवर्ड. और जिसकी इंथैल्पी नेगेटिव है उसका एंडोथर्मिक क्या है? उसका एंडोथर्मिक बैकवर्ड. तो जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो किस तरफ जाएगा? टू द लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट एंडो है. अगर इसका डिक्रीज करोगे तो कब जाएगा? कहां जाएगा? टू द राइट, क्योंकि राइट वाला एक्सो है. डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्स द एक्सोथर्मिक, increase in temperature always favors the endo. मैं लिख देता हूं, यहां लिख दूं, ये इसकी डिटेल बताने की जरूरत तो नहीं है. Increase in temperature always favors the endothermic side, endothermic direction.
So whenever you increase the temperature, it always goes in endothermic direction. अब endothermic हर किसी में different है. When the enthalpy is positive तो endo right है, फिर से बता रहा हूँ. And when the enthalpy is negative तो endo left है. ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि उसका forward exo होगा. And a decrease in temperature, a decrease in temperature favors the exothermic direction. Yes, so this is decrease and it always favors. Now, when the enthalpy of the reaction is negative, that means forward is exo. So इसका जो equilibrium आता है वो 450 पे आएगा. This reaction is easy. So what will happen if I decrease the temperature from 450 to 400? Anyone in the class? What will happen to the position of equilibrium if you decrease the temperature of this very reaction from 450 to 400? So basically you decrease. तो किस तरफ जाएगा और क्यों जाएगा? So sir, exo की तरफ जाएगा, which is the forward one. Excellent. So you will get more ammonia. So you need to explain as well. As the forward is exothermic, to the exact same reason, to compensate the effect of low temperature, forward. यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ ये sentence तो आपने लिखना ही लिखना. जब भी temperature कम कर रहे हैं, तो I want everyone to write this sentence to compensate the effect of low temperature. That is the must sentence. अगर वो forward जा रहा है तो आप लिख दें forward is favored. अगर backward जा रहा है तो आप लिख दें backward is favored. And whenever you are increasing the temperature, तो आपने एक golden sentence लिखना है. What is that golden sentence? Excess heat is absorbed. वो किस direction में होगी वो depend करेगा. If the reaction is endothermic तो आप लिखेंगे forward direction में excess heat absorb हो रही है. And if the reaction is exothermic तो आप लिखेंगे backward में. But excess heat is absorbed for increase in temperature and to compensate the effect of low temperature for decrease in temperature. Make sense, everyone? Please say yes. Yes, sir. Yes, sir. Excellent. Okay. Let's now investigate the second factor, which is very easy but important, and that factor is called pressure. Pressure is the second factor. And the good thing is it only works for gases, right? Okay. Imagine ऐसा नहीं कि सब लोग गैस होने चाहिए. कोई reactant में कोई एक भी गैस हो, it work for those examples. Again, we have two conditions. I mean, two हमारे पास हैं कि either you can increase or decrease the pressure. So let's first look at the effect of increase in pressure, and then we'll investigate the effect of decrease in pressure. So imagine you have a reaction, a chemical reaction where sulfur dioxide, which is a gas, it reacts with oxygen, which is again a gas, in a reversible reaction. In a reversible reaction to form sulfur trioxide, which is a gas. Let's balance this equation by putting half with this oxygen, so it's at the balance equation. Now this very reaction achieves equilibrium at 2 atm. Atm is a unit of pressure, like degrees for temperature and centimeters for length. Atm is a unit for pressure. So whenever you increase the pressure, the equilibrium goes to that side where we have less number of moles of the gas. Less moles of the gas. Less moles नहीं लिखना. So कहाँ जाएगा? Increase shifts the equilibrium, shifts to the side with less number of moles of gases. ठीक है, तो उस तरफ जाएगा जहां पे गैस के मोल्स क्या हैं, कम है. अब आप कहेंगे सर यहां देख के हम कैसे गैस के मोल्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं? भाई देख सकते हैं ना, देखो सब लोग, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ उसका मतलब 1 है और जिसके साथ कुछ लिखा हुआ है वो वही नंबर है. so, ये गैस भी फिर आपने ये भी चेक करना, मेक श्योर कि इफ दैट इज गैस. सो 1 मोल इसका है, हाफ मोल इसका है, तो और ये भी गैस है. So in total, we have 1.5 moles of gases on the reactant side, on the left side. And how many moles of gases on the right side? कितने moles हैं? इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या है? 1. तो यहाँ पे 1 mole है. So whenever you increase the pressure, like I said, equilibrium goes to that side where we have less moles of gases. तो इस केस में वो किस तरफ जाएगा?
किस तरफ जाएगा? इट मूव टू द राइट साइड। हो सकता है कोई ऐसी एग्जांपल हो जहां पे लेफ्ट साइड, वो भी कर लेते हैं। सो क्यों जाएगा? रीजन भी आपको पता नहीं चाहिए। टू कॉम्पनसेट द इफेक्ट ऑफ हाई प्रेशर, टू कॉम्पनसेट, ये रीजन है आपकी, द इफेक्ट ऑफ हाई प्रेशर, फॉरवर्ड जाएगा। इसमें कोई फिक्स नहीं है। जिस तरह मैंने कहा, हमें हो सकता है राइट पे कम हो या हो सकता है लेफ्ट पे कम हो। फॉर एग्जांपल, मैंने ऊपर एक एग्जांपल दी थी आपको, कैल्शियम कार्बोनेट, we have it make calcium oxide and carbon dye. Imagine the reactions at equilibrium. This is solid, this is solid. Now look closely on this example. How many moles of the gases on the left side? Is there any gas on the left side? Can you see any gas? There is no gas on the left side. So I have 0 moles of gases on the left side. This is solid. Ignore kar diya, jis tarah ye solid tha. But I have 1 mole of gas on the राइट साइड। तो इसका अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो किस तरफ जाएगा इक्विलिब्रियम? टू द लेस मोल्स ऑफ गैस। इसमें लेस मोल्स किस तरफ है? लेफ्ट साइड। तो इसमें आपने वो देखना है कि ऑन विच साइड वी हैव फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस। तो व्हेनेवर यू इंक्रीज द प्रेशर, इक्विलिब्रियम गोज टू द साइड विद लेसर मोल्स ऑफ गैस टू कॉम्पनसेट द इफेक्ट ऑफ हाई प्रेशर। अगर वो राइट पे जा रहा है तो आप लिखेंगे मोर प्रोडक्ट्स आर मेड, अगर वो लेफ्ट पे जा रहा है तो आप लिखेंगे मोर रिएक्टेंट्स आर मेड। मेक सेंस एवरीवन? यस। डिक्रीज में क्या होगा? इसका बिल्कुल ऑपोजिट, टू द साइड विद मोर मोल्स ऑफ गैस, more moles of gas. So whenever you decrease the pressure, whenever you decrease the pressure of a system which is at equilibrium and it involves some gases, सारी gases होंगी या कुछ gases हैं, so decrease in pressure favors that side where we have greater moles of the gas. Okay, let's look at the same example. अगर मैं 2 को 5 करूंगा, if I increase the pressure from 2 to 5, I increase the pressure. So an increase in pressure shift the equilibrium to the side with less moles of gas, and a decrease in pressure shift the equilibrium to the more moles of gas. तो इस केस में अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो राइट पे जाएगा, डिक्रीज करूंगा तो ज्यादा की तरफ जाएगा। अगेन द रीजन इज सेम, टू कॉम्पनसेट द इफेक्ट ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, सो रीजन क्या लिखेंगे? टू कॉम्पनसेट द इफेक्ट ऑफ लो प्रेशर। अब वो जिस तरह भी जाएगा आपने लिखना है दैट रिएक्शन इज फेवर्ड। यस शमी। शाबाश। What's what? ATM is a unit for pressure. It is a unit of pressure. It is a unit of pressure. Isn't it pascals? No. I mean, in O levels there are different units of pressure. We have Pascal. We have there is another unit. अभी slip हो गया मेरे mind से. But ATM that's a unit that we use in O levels, right? बस इसमें conversions आपको हम करवा देंगे जब पास पेपर में questions कुछ है। Yes, so effect सबको समझ आ गया? The effect of change in pressure. Yes. इसके questions भी करेंगे, so you'll get to know more about the same. We have lot of questions. अभी इंशाल्लाह हम ये chapter complete करेंगे, तो इसके जब actual questions होंगे, so you'll get to know more about the same. Yes, Zainab. Sir, I'm still confused. So the idea is, let me consider another example, Dr. Zainab. Imagine we have nitrogen reacts with hydrogen, and it's a reversible reaction to get ammonia. We know that ammonia is gas, hydrogen is gas, nitrogen is gas. Now, this reaction achieves equilibrium at 200 atm. That is the unit, 200 atm. Atmospheric. System is closed. I want everyone to predict what happened when I increase the pressure to 250 and 150. Decrease kiya, increase kiya in 1 minute. What happens and why? Shabash. Everyone, please. Yes sir, आप repeat करेंगे, मेरा phone charging पे लगा हुआ था। So there is an example, and I wrote the pressure at which the system achieves equilibrium. You need to predict the change in equilibrium, position of equilibrium when you increase the pressure from 200 to 250, or when you decrease the pressure from 200 to 150. Okay sir, thank you.
30 seconds. Done, Ryan. जी सर. रयान, वैसे मैंने एक वॉच अच्छी पहनी हुई है, आपने ये नहीं कहा कि सर यू आर लुकिंग गुड. मुझे नजर नहीं आ रही. नाइस वॉच. ओके, चलिए मैं दिखा देता हूँ. अच्छी लग रही है. बहुत अच्छी लगी है सर. थैंक यू रयान भाई. ऑलराइट, टाइम इज अप एवरीवन. ओके, सो देखो हमने इंक्रीज किया प्रेशर. व्हेनेवर यू इंक्रीज द प्रेशर, आपने ये देखना है कि इट गोज टू द साइड विद लेस मोल्स ऑफ गैस, लेसर मोल्स ऑफ गैस. अब हम देखते हैं कि ऊपर इक्वेशन में ऑन विच साइड वी हैव लेसर मोल्स ऑफ गैस. अच्छा, इसको बैलेंस तो किया, यहाँ पे 2 आना था. अब लेट्स count the moles on the left side, on the reactant side, at how many moles of the gases. ये गैस है, कितने मोल्स हैं इसके? 3 moles. ये गैस है, कितने मोल्स हैं इसके? 1. In total we have 4 moles of gases on the reactant side and a gas, and we have 2 moles of gases on the right side. So whenever you increase the pressure, equilibrium goes to the side with lesser moles of gas. तो कहां पे जाएगा? To the right. क्यों जाएगा? क्योंकि उसके कम मोल्स हैं. So it's As like there diffusion, I mean, yes, more or less same ही है. High से high कम की तरफ. concentration, low concentration. But it applies only when you increase the pressure, Dr. Zainab. Sir, As there are lesser moles of gas, so to compensate the effect of high pressure, more products are made. Is particular example, more products are made. Make sense, everyone? Yes, ma'am, Shameen. sir, जब आपने इक्वेशन बैलेंस की थी तो सर आपने NH3 के साथ 2 लिखा था. तो सर हम H3 के उसको हम क्यों नहीं कंसिडर करेंगे? आपने उस इसको साइड पे बेटा, भी 2 लिखा है ना आपने. बेटा ये मैंने इसको कंसिडर किया ना. ये देखो, इसके 3 और इसका 1, तो तभी तो ऐड करके टोटल 4 बने. नहीं सर, द राइट. हाँ, ये अमोनिया है ना. तो ये एक अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है. दिस इज 1 अमोनिया. इसके साथ 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. दिस होल थिंग इज 1 अमोनिया. दैट्स अ गुड क्वेश्चन. दिस 3 डजंट रिप्रेजेंट कि ये 3 है. ये एक मॉलिक्यूल. मुझे बताओ कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, शामीन? व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाई? तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का ये फॉर्मूला है. दैट इज 1 का. इसका ये मतलब नहीं कि इसमें आई मीन 2 कार्बन डाई हैं, ये 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, बट एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैज दिस फॉर्मूला. तो अगर एक बार CO2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 1 मोल ऑफ CO2 है. अगर उसके साथ 2 लिख दें, दैट इज 2 मोल्स ऑफ CO2. 3 लिख दें तो 3 मोल्स ऑफ CO2. बट अगर कुछ भी नहीं लिखा होता, दैट शोज 1 मोल ऑफ CO2. यस, यस सर, थैंक यू. ऑलराइट. सो डिक्रीज करेंगे तो आई होप सबको समझ आ गई ये बात. आई डोंट नो मेरी ये इसकी बैटरी क्यों खत्म हो गई है. Yes, sir. Am I still audible? यस. What time we have? 7 minutes है ना. चलो मैं जल्दी से हम थर्ड फैक्टर कर लेते हैं, which is pressure. I hope आप सबको समझ आ रही है, but it's perfectly fine अगर कोई 60-50% भी आ रही है, because we are going to solve इंशाल्लाह. इससे रेलेवेंट हम पास पेपर्स करेंगे, तो आप देखेंगे कि जिसका भी थोड़ा सा भी इशू है, आई मीन कंफ्यूजन है, वो इंशाल्लाह आपकी क्लियर हो जाएगी. यस डॉक्टर जोया. Sir, instead of writing to compensate the effect of low pressure, can I just say so that the pressure increases? आई थिंक ठीक है, लेकिन अगर आप कॉम्पनसेट लिख देंगे तो वो एक ज्यादा क्लैरिटी से एग्जामिनर को आंसर मिल जाएगा. वो भी ठीक है, लेकिन अगर हमें एक ज्यादा बेहतर सेंटेंस या वर्ड मिल जाए, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दैट. तो कॉम्पनसेट का मतलब होता है एडजस्ट करेगा वो. जस्ट इक्विलिब्रियम विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली. देखो बहुत सर्दी आएगी तो आप लोग वार्म क्लोथ्स पहनेंगे. आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करते. हम लोग वी एडजस्ट अकॉर्डिंगली. बहुत गर्मी आएगी जिस तरह आजकल है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपने पानी पियेंगे, हम कपड़े उसके अकॉर्डिंगली पहनेंगे. सो वी एडजस्ट अकॉर्डिंग. इसी तरह जो सिस्टम होगा ना, जो
इक्विलिब्रियम होगा, इट एडजस्ट अकॉर्डिंगली, उसको हम कहते हैं कॉम्पनसेट द इफेक्ट ऑफ गर्मी और सर्दी। गर्मी में हम देखो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं, सर्दी में उसके अकॉर्डिंगली। सो सिस्टम भी ऐसे करता है, व्हेन यू इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, द सिस्टम विल कॉम्पनसेट दैट इफेक्ट अकॉर्डिंगली एंड इट ट्राई टू रिमेन, वो दोबारा उसी सिचुएशन पे जाएगा जहां पे वो पहले से था। थर्ड इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब पहले से हम लोग समझ लें। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल्स ओवर वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल, कि कितने मोल्स हैं कितने वॉल्यूम में। इसको सिंपल वर्ड में हम अमाउंट कहते हैं, क्वांटिटी। सो फॉर इंस्टेंस वी अगेन हैव दिस रिएक्शन, नाइट्रोजन reacts with hydrogen in a reversible reaction to form ammonia. The system was closed system. When the system was at equilibrium, the concentration of both sides, it was not equal. मैंने ये कभी नहीं कहा कि equal, मैंने कहा same। मतलब जब equilibrium achieve हुआ, जितनी concentration इसकी थी और जो भी concentration इसकी थी वो उससे आगे change नहीं होगी। कभी आपने ये नहीं लिखना concentration is equal. No, it stays the same. Whatever the concentration when the reaction reaction achieved equilibrium, it stays the same. But let's remove some of the reactant or the product from the reaction mixture and see how does the equilibrium behaves and react to it. So we just open, उसका हम थोड़ा सा remove करते हैं। Let's say मैंने यहाँ से system पहले closed system था, हमने उस close को disturb किया and we remove some of the ammonia. हमने बीच में से थोड़ी सी अमोनिया निकाली। तो जब आपने अमोनिया रिमूव की तो यू बेसिकली डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। आपने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, डिक्रीज किया। तो माइंड इट एवरीवन, द इक्विलिब्रियम व्हेनेवर यू चेंज द कॉन्सेंट्रेशन, तो चेंज में आपने ये देखना है कि किस साइड की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। जिस साइड की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इक्विलिब्रियम उसी साइड पे शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम गोज टू दैट साइड वेयर वी हैव लो कॉन्सेंट्रेशन to compensate the effect of low concentration until के वो अमोनिया दोबारा से इक्वल हो जाएगी। सिस्टम अगर आपने क्लोज किया तो फॉरवर्ड होता रहेगा until के दोबारा उसकी इतनी कंसंट्रेशन हो जाएगी जितनी इक्विलिब्रियम पे थी, फिर से वो बैकवर्ड जाना शुरू हो जाएगा, सिस्टम विल अगेन अचीव इक्विलिब्रियम। बट द मोमेंट यू रिमूव द प्रोडक्ट्स, जैसे प्रोडक्ट आपने रिमूव किए, यू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द राइट साइड, तो इक्विलिब्रियम भी राइट साइड पे ही आएगा क्योंकि इस साइड की कॉन्सेंट्रेशन को आपने डिक्रीज किया। ओके, ये समझ आ गया सबको। अब हम ये करते हैं, अब हम प्रोडक्ट को डिक्रीज नहीं करते। अब मैं ये करता हूं कि सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, system is at equilibrium, just last 2 minutes everyone, and I just added, instead of removing, I added some of the nitrogen. So when I increase nitrogen in the reaction mixture, I basically increase the concentration of the reactants. अब मुझे बताओ किस साइड पे जाएगा, तो which side the equilibrium will move and why? आपने देखना ये है कि किस साइड की concentration लो हुई है। The side with low concentration, equilibrium favors that side. Always, that's a universal rule. Yes, Ryan Aslam, I can see your name popping on the screen. सर मुझे बस 2 सेकंड दे, वो कमरे में कोई है। Okay जी, okay. Ryan is busy. So हमारे पास और बड़े अच्छे बच्चे हैं। Dr. Amna, when I added more nitrogen to the reaction, to which equilibrium will be disturbed since I changed the concentration of the reactant and the overall equilibrium mixture. So to which side the equilibrium will move and why? Dr. Amna. It will move to the right. Excellent. क्यों जाएगा? शाबाश. To balance it. Okay, देखो सब लोग, मैं आप सबको बड़े easy example से explain करता हूँ. Imagine this was the concentration. Just this was the concentration when the system was at equilibrium. कोई भी number मैंने ले लिया random. System was at equilibrium when the concentration was same. वो जो भी थी, वो 5 थी एक साइड पे, 6 थी एक साइड. System was at equilibrium. मैंने इसमें से सबसे पहले क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा रिमूव किया. जब मैंने यहाँ से रिमूव किया तो ये फॉर एग्जांपल 4 हो गया, तो ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई. इक्विलिब्रियम विल मूव टू द राइट अनटिल के उसकी कंसंट्रेशन वही हो जाएगी व्हिच वाज जो पहले थी. तो जिस साइड की कंसंट्रेशन लो होगी उस साइड पे जाएगा. अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको नहीं छेड़ा 5 को, इट इज स्टिल 5. अब हमने इसमें ऐड कर दिया, तो हमने जब इसमें ऐड किया तो ओवरऑल ये ज्यादा हो गया. ओवरऑल द रिएक्टेंट साइड इंक्रीज अगेन, तो फिर प्रोडक्ट साइड बाय डिफॉल्ट डिक्रीज हो गई. तो अगेन equilibrium will go to the right. So you need to check that which side have low concentration. Equilibrium always goes to that side. Make sense, everyone? Please say yes. Yes. Yes, sir.
Okay, so let me just write the effect of increase and decrease. So let's say we are increasing the concentration, and increase in concentration on one side, अगर एक side पे increase कर देंगे, shifts the equilibrium to the other side. अगर इस side की increase करेंगे तो दूसरी side पे जाएगा. Shifts the equilibrium, position of equilibrium लिखना है आपने, to the other side. क्यों जाएगा other side पे? To compensate the effect of, अब किसका effect है? To compensate the effect of high concentration on the other. ठीक है, इस साइड पे concentration high हो गई है, उस high को कम करने के लिए इस तरफ जाएगा. ठीक है, तो to compensate the effect of high on the same side, I mean एक साइड पे डिक्रीज हो गई, दूसरी पे इंक्रीज हो गई है, तो हम इसको लिख सकते हैं टू कॉम्पनसेट द इफेक्ट ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन. मेक सेंस एवरीवन? डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? अ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑन वन साइड इक्विलिब्रियम उसी साइड पे रहेगा, विल कॉज द इक्विलिब्रियम टू शिफ्ट ऑन द सेम साइड, विल कॉज द इक्विलिब्रियम to shift on the same side to compensate the effect of low or high concentration, but both are correct. So in today's class, we try to understand the basic core concept of shifting of equilibrium. The equilibrium is when the rate of forward and backward are equal. There is one condition to achieve the equilibrium, that is the system has to be closed system, and there are two features. At equilibrium, rate of forward and backward are equal. At equilibrium, the concentration of both sides stays the same. There are three factors: the temperature, the pressure, and the concentration. Those can affect the position of equilibrium, and the equilibrium will react to that change, and it react in such a way that it try to regain the position of equilibrium. Dr. Zoya. Sir, does catalyst not affect an equilibrium? Excellent question. भाई catalyst का लिख रहे हैं सब लोग. A catalyst have nothing to do with the position of equilibrium. Catalyst cannot alter the position of equilibrium. So it just overall speeds can up the only- reaction मगर Yes, equilibrium रहता है. excellent. It only speed up the reaction. Yes, catalyst एक अच्छा काम ये करेगा कि when it speed up the reaction, तो मुझे ये बताएं कि forward को speed up करता है या backward को करता है? शाबाश. तो दोनों को करता है. Speed up the reaction. तो excellent रेयान. जब आपको आएगा भाई कैटलिस्ट जो है ये सिर्फ फॉरवर्ड का दोस्त नहीं है. कैटलिस्ट फॉरवर्ड को भी स्पीड अप करेगा, बैकवर्ड को भी करेगा. तो जब ये दोनों को स्पीड अप करेगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट देयर आर मोर चांसेस कि इक्विलिब्रियम जल्दी स्टैब्लिश होगा. जब फॉरवर्ड भी स्पीड से हो रहा है, बैकवर्ड भी, तो जल्दी उस टाइम पे हम पहुंच जाएंगे वेयर द रिएक्शन कैन अचीव इक्विलिब्रियम. बट यस, कैटलिस्ट उस पोजीशन को चेंज नहीं कर सकेगा. इट हेल्प्स द रिएक्शन. लिखे सब लोग, अ कैटलिस्ट ओनली हेल्प्स द रिएक्शन to achieve the equilibrium quicker. अगर पहले 1 hour में हो रहा है तो 30 मिनट्स में हो जाएगा. अगर पहले 30 मिनट्स में हो रहा है तो अब 20 मिनट्स में हो जाएगा. Make sense everyone? Yes. Yes. Allah Hafiz. See you tomorrow with the same. Allah Hafiz. कल हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह. Allah Hafiz.